Hello everyone, welcome back. In last video we have seen one derivation in which we have derived the expression for electric field intensity due to infinite uniform line charge, right? So in that case we have derived the expression of vector E as E is equals to that is rho L divided by 2 pi epsilon 0 रो इंटू यूनिट वेक्टर ए रो, राइट। ये इक्वेशन हमने निकाला था जहां पे हमने अज्यूम किया था कि आपका जो लाइन चार्ज है, यूनिफॉर्म लाइन चार्ज जो है, दैट यूनिफॉर्म लाइन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द जेड एक्सिस, इट इज प्रेजेंट अलोंग द जेड एक्सिस एंड वी हैव कंसीडर्ड दिस पॉइंट पी, राइट, एंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट पी फ्रॉम दिस लाइन चार्ज उसको बोला था हमने रो, राइट। और ये जो यूनिट वेक्टर था फ्रॉम लाइन चार्ज टुवर्ड दिस पॉइंट पी, ये यूनिट वेक्टर था हमारे पास एरो, and the line charge density we have assumed that is nothing but your rho L. So this was the situation. So the electric field intensity at any point P due to infinite uniform line charge which is present at a distance rho is given by vector E is equals to rho L divided by 2 pi epsilon 0 rho into unit vector A rho. In that we have to assume that here rho is nothing but the distance of this point P from the uniform line charge. 2 pi epsilon 0 is constant. Rho L is nothing but the line charge density and A rho is nothing but the unit vector directed from this uniform line charge towards the point P. तो ऑलवेज जो यूनिट वेक्टर रहता है वो चार्ज की तरफ से फील्ड पॉइंट की तरफ रहता है। ये ऑलरेडी मैंने इसके पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं, फिर से एक बार बताता हूं कि एरो इज नथिंग बट द यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम दिस लाइन चार्ज टुवर्ड्स दिस पॉइंट पी। सो इस वीडियो में एक हम सिंपल न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। दैट न्यूमेरिकल विल बी शॉर्ट, सिंपल न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। So that's why the heading is the numerical based on calculation of vector E due to line charge density. तो जब भी आपको line charge density दिया रहेगा न्यूमेरिकल में, you have to come to this formula, right? And you have to calculate the electric field intensity. So let us go and see the numerical and we will try to solve this numerical. So as you can read from this numerical, देखिए क्या दिया हुआ है, 2 meter from the z axis ई दिया हुआ है। ई यानी क्या, हमारे पास वेक्टर ई है, राइट। वेक्टर ई इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इट इज इन द वेक्टर फॉर्म। सिंपली अगर मैं ई लिखता हूं इसका मतलब क्या, ई इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ई। इस वेक्टर ई का अगर मैं मैग्नीट्यूड कंसीडर करता हूं दैट इज नथिंग बट योर ई, राइट। तो क्या दिया है देखिए, 2 मीटर फ्रॉम जेड एक्सिस यानी जेड एक्सिस से 2 मीटर की दूरी पे, E due to the uniform line charge, देखिए यूनिफॉर्म लाइन चार्ज दिया हुआ है, राइट, along the z axis। लाइन चार्ज कैसे हमारे पास, along the z axis, यानी ये फॉर एग्जांपल z एक्सिस अगर मैं कंसीडर करता हूं तो इस z एक्सिस के along हमारे पास क्या है, लाइन चार्ज प्रेजेंट है, यूनिफॉर्म लाइन चार्ज प्रेजेंट है, राइट। और इससे 2 मीटर की दूरी पे, राइट, इसके 2 मीटर की दूरी पे E आपको दिया हुआ है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको दिया हुआ है। और वो कितना दिया है हमारे पास, 1.8 into 10⁴ volts per meter। So find the uniform line charge density rho L। यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डेंसिटी आपको rho L की वैल्यू आपको निकालना है, राइट। तो यहाँ पे एक डिस्टेंस दिया हुआ है, ये डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, द डिस्टेंस ऑफ द फील्ड पॉइंट फ्रॉम द लाइन चार्ज, इसको बोलते हैं हम रो। यानी यहाँ पे आपको रो की वैल्यू दिया है 2 मीटर और ये लाइन चार्ज, यूनिफॉर्म लाइन चार्ज दिया है, इसका लाइन चार्ज डेंसिटी हम लिखते हैं रोयल। तो ये रोयल की वैल्यू हमको निकालना है। और E आपको दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया हुआ है, दैट इज 1.8 into 10⁴। तो एज वी नो वेक्टर E क्या लिखते थे हम, वेक्टर E is equals to, in terms of this line charge density, that vector E can be written as rho L divided by 2 pi epsilon 0 रो into unit vector a rho लिखते थे, राइट। तो यूनिट वेक्टर a rho indicates the direction of the electric field and this direction of the electric field is always from the line charge towards the field point, right। लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड दिया हुआ है तो I will only consider the magnitude, I will neglect this direction part, I will consider only the magnitude।
तो मैग्नीट्यूड का इक्वेशन क्या लिखेंगे हम? सिंपली मैग्नीट्यूड कैन बी रिटन एज रो एल डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन 0 into rho, right? So this is the expression for the electric field intensity due to the line charge. Don't get confused in the line charge and the point charge. Point charge में के लिए क्या हमारे पास? Point charge के लिए वेक्टर E का एक्सप्रेशन था हमारे पास, that is Q divided by 4 pi epsilon 0 R square into unit vector AR. Right? There is a slight change in the formula of the electric field intensity due to the point charge and the line charge. Further in the videos you will be having the surface charge, तो उसका भी कुछ formula अलग आएगा. So for every type of charge you have to remember the expression for electric field intensity, and whatever the charge given to you, accordingly you have to apply the formula for the electric field intensity. So for our numerical, the line charge, uniform line charge is given, so that's why we have considered this formula, and from that, as the only magnitude is given, I have written the expression for the magnitude from this expression of vector electric magnetic field, right? तो इसमें अगर आप देखोगे तो E की वैल्यू भी आपको दिया हुआ है, right? रो एल आपको कैलकुलेट कर 2 पाई एप्सिलॉन 0 इज कांस्टेंट, एप्सिलॉन 0 इज 8.854 into 10 to the power minus 12, and rho is given to you. So the only unknown parameter is the line charge density. So I will put all the values here and I will calculate rho L. So that calculation I have shown you on the next slide. So if you can see here, the magnitude of the electric field intensity due to uniform line charge, it is given by this formula. ये अभी मैंने बताया था आप लोगों को. इसके ऊपर से रो एल का इक्वेशन लिखता हूं तो देयरफॉर रो एल इज इक्वल्स टू, ये लेफ्ट हैंड साइड में लेके अगर जाता हूं तो क्या हो जाएगा? E मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन 0 into रो. सो आई विल पुट ऑल द वैल्यूज. तो E की वैल्यू दिया है आप लोगों को 1.8 into 10 to the power 4. देन 2 पाई इज कांस्टेंट, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 8.854 into 10 to the power minus 12, और रो आपको दिया हुआ है 2, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम यूनिफॉर्म लाइन चार्ज दिया हुआ है, इसका मतलब रो दिया है आप लोगों को, तो रो की वैल्यू 2 पुट कर दिया. और अगर ये मैं कैलकुलेशन अगर करता हूं तो यू विल फाइंड दैट दिस रो एल इज इक्वल टू 2 into 10 to the power minus 6 coulombs per meter, right? So this is your answer, right? So in this way you can calculate the value of rho L. This is very simple numerical. So as this was the first numerical on this topic, I have considered the simple numerical. So hope this is clear to you. So that's all for this video. Thank you very much.